Tell me about the timers of HSRP, whichever you know. Tell me about the HSRP timers. Yes. Hello timer, hold timer. Yes. Do you remember it? Do you remember it? Hello timer is of 3 seconds. Okay, and hold down time 3 seconds. And hold down timer is of 10 seconds. Okay. What was the UDP port number? Yes. What was the port number of UDP? Hmm? UDP port number was 1985. Okay. And do you remember the multicast address by which it sends? Yes. And it uses the multicast address 224.0. Yes, 224.0.0.2. Okay. Now, can you tell me about the HSRP states? What was the role of active, standby, and listen? Tell me. With the help of which address this active router works? With the help of which address this active router works? Virtual IP. Don't forget this, okay? And what is the role of listen? What is the role of listen? आवाज नहीं आ रही है मेरे ढंग से. So now we will do one practical of HSRP, okay? Which look, whenever this our port sorry, our router is on the standby mode now, okay? Then all the other routers will be in the listen state. Whenever the standby router becomes the active now, any which will have the highest priority now, that will become the standby. Okay, that was the just role of the listen state. Highest. Yes. So now you can mute your mic.
So first we will configure everything, okay, like basic HSRP. After that, we will see how, with the help of HSRP, how we can perform the load balancing. Okay, although it doesn't support a proper kind of load balancing, but we can do on a minimum level. Let me open all the devices first. When I will tell you about GLBP, then you will understand. When we will talk about GLBP, na, then I will explain why I have said this. अरे करने दो यार. जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें भी चलेगा. और जो हमारे अगर एज राउटर में अगर मल्टीपल राउटर्स है तो उसमें भी चलेगा. कस्टमर एज का राउटर हो. अरे कस्टमर में क्या लगा, कितने राउटर लगे. कस्टमर वगैरह के नाम क्यों ले रहे हो यार भाई. ये हमारा आईएसपी है. अरे ये हमारा आईएसपी है. हमारा एचएसआरपी हम पढ़ क्यों रहे हैं. ये एक कस्टमर का राउटर होगा और ये एक अलग कस्टमर का राउटर होगा तो एचएसआरपी वर्क करेगा. हाँ जी एक है. हाँ हाँ एक है. टोपो अरे वो तुम बताओगे ना. ये तुमने एक कस्टमर का बता दिया. अब ये तुम बोलोगे ये अलग कस्टमर होगा. हम्म, ये इधर कराएगा ना, उधर क्यों कराएगा. आईएसपी वाला आईएसपी में तो एक ही राउटर है ना. इधर रन कराएगा और इधर भी किधर रन कराएगा. जो इनके लैन वाले होंगे उसमें रन कराएगा ना. यहाँ पे अलग से होंगे. यहाँ पे बहुत सारे लैन डिवाइसेस होंगे. अरे टोपोलॉजी पे डिपेंड करेगा यार. डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ऐसे नाम. ठीक है. एचएसआरपी कौन सा कॉन्सेप्ट है. स्विचिंग का ना. हम लेयर 3 स्विचिंग में भी करते हैं. यहाँ पे हम राउटर यूज कर रहे हैं. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होगा ना,
उस पे मेनली हम HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं। बाकी जो भी चीजें अकॉर्डिंगली जो भी क्लाइंट वगैरह की चीजें है, अगर वहाँ पे जहाँ पे नीड होगी, जहाँ पे अगर हमें चाहिए कि हमारे अगर ये लिंक डाउन होता है या ये वाला राउटर डाउन होता है तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए, या लोड बैलेंसिंग के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए जो अलग एंड से जा सके। ठीक है, अगर वहाँ पे तुम्हारे अगर क्लाइंट एंड पे एक ही राउटर ले रखा उसने, ठीक है, एक ही राउटर है, एक ही लाइन है उसके पास, तो वहाँ पे HSRP करने का क्या फायदा है? राउटर तो एक ही है ना। तो हमें क्या चाहिए? मल्टीपल चाहिए होंगे, तो फिर हम वहाँ पे HSRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, और ये छोटे एंड पे नहीं होगा, बड़े बड़े एंड पे होगा, क्योंकि हर कोई मल्टीपल राउटर्स ऐसे अफोर्ड नहीं करेगा। ऑब्वियसली बड़े नेटवर्क्स में होता है HSRP। ठीक है, और HSRP कम होता है मेन GLBP, वो बताएंगे जब GLBP करेंगे, तो फिर मेनली GLBP का रूल क्या है। HSRP देखो, मैं लोड बैलेंसिंग अभी समझाता हूँ, तो बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, this is our ISP end, okay, and suppose there are three routers, okay, and they are connected to this switch, okay. Suppose there are four PCs, okay. Suppose there are four PCs, okay. Each PC defines hundreds of PCs, okay. So it means we have 400 PCs data is going from either this router, or either this router, okay. I have talked about that we will create multiple groups, okay, like standby group 1, standby group 2, standby group 3, and standby group 4, for example, okay. Now what I have done, that this 100 data's PC will go from this router, and this router's PC, this PC's data, this 100 PC's data will go from 200 group 2. Same for 3 and 4. What we how we can do this? We will create a default gateway of, like for this we will give 192.168.1.100, and for all these PCs we will give dot 200. For this we will give dot 240, and for this we will give 250. Okay, this is how HSRP will perform the load balancing. But that's why I said that it is not a proper kind of load balancing. Okay, because we are it will create a lot of burden on that administrator. Okay, first he have to, like, if he is not defining manually, then he have to create multiple DHCP pool. Okay, from there it will provide all these IP and default gateways to all these routers, oh sorry, PCs. Okay, so that's a too much kind of thing, or we can say too much burden on the administrator. Okay, that's why we have one more concept called GLBP. Okay, in that we will study about how we will perform. तो बोला ना मल्टीपल पूल्स क्रिएट कर। हाँ, ठीक है, तो नहीं नहीं, बाकी सब आईपी, और वो डिफाइन करनी पड़ेगी कितनी आईपी। ठीक है, रेंज, रेंज, ठीक है। अब यार पूरा नहीं हुआ, रिक्वेस्ट करेंगे पीसी, ठीक है। डीएचसीपी को कैसे पता चलेगा? वन का ग्रुप है, टू का ग्रुप है, मतलब डीएचसीपी को ग्रुप से क्या लेना देना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये 100 पीसीस, अरे जो 100 पीसीस है, इनको वीलैन में डाल देंगे,
और DHCP में VLAN के हिसाब से ग्रुप बनते हैं, पता है ना? ठीक है, जो पूल होता है वो VLAN के हिसाब से ही बनता है। करा है वाला प्रैक्टिकल? ठीक है, तो जो VLAN है उसके हिसाब से डाल के कर दें। ठीक है, अरे हम वैसे भी डिवाइड कैसे करेंगे, अलग अलग जो 100 पीसीज होंगे VLAN के थ्रू तो करेंगे, और कैसे करोगे? ठीक है, पर ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं, फिर कैसे देगा ग्रुप? कुछ डिवीजन तो चाहिए होगी, या तो फिर डिफरेंट नेटवर्क में डालना पड़ेगा। ठीक है, VLAN के अलावा और कोई तरीका तो नहीं है शायद। ठीक है, VLAN के अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। कैसे डिवाइड करोगे आप बताओ, कुछ है तो? तुमने करा? ये माइक म्यूट करो, आवाज आ रही है। So here we are giving default gateway, which is dot 101.100, which is our virtual IP. So here we have done almost all configuration. We have to do no IP routing here. Routing here. Okay. Let us save this configuration. After this, we will move on to the router 2. Okay. Here, what we are gonna do, we will enable like we will write IP address to this router's interface. We will give it 1, and to this serial interface we will give 1.1. Okay, and let's do it no shut, and after that we will enable the HSRP here, default. Okay, and auto summary, and we will enable Kaushal, why do we enable passive interface? Okay, here everything is done. Which interface? कौशल 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 कौशल, कस्टमर वगैरह मत लाओ, कंपनी का प्रोसेस मत लाओ, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, लैंड डिवाइसेस, वैन डिवाइसेस, इससे बात करो। ठीक है, कस्टमर सिर्फ हमारे लैन में नहीं होते, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे या तो लैन बोलो या वैन बोलो। ठीक है, कौन सी साइड पे, हम अपने लैन साइड में या वैन साइड पे? लैन, लैन साइड पे। क्यों करते हैं हम लैन साइड पे? क्या होगा अगर हम लैन साइड पे नहीं करेंगे? फिर दिक्कत क्या होगी, कोई पूछे? हर राउटर्स के एक रूट के दो दो नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा जो ये लैन एरिया होगा, यहाँ पे कंजेशन बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ? कंजेशन बढ़ेगा क्योंकि अननेसेसरी जो अपडेट्स होंगे वो सब क्रिएट होंगे, एलएमएस क्रिएट होंगे, वो हमें चाहिए नहीं ना। ठीक है, आप क्या करते हैं, मेरे को कमांड बताओ। मैं इंट E0/1 पे HSR अनेबल करना चाहता हूँ, क्या कमांड होगी? आईपी क्या दूं यहाँ पे? कोई भी क्यों, हमने दे रखे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, तुम्हारे एक ट्रैक वाला भी था ना, चलो रुको ट्रैक वाला करते हैं। नाउ वी विल डू सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑन R3। E0/1 192, ये माइक म्यूट रखो। 2 डॉट,
101.2 sorry, IP address 192.168.101. Insert int E0/0. We will write the IP 192.168.1. Now we will enable HSRP here. Now same thing we will do on the router 4. 101.323. On int E0/0 interface will give IP address 192.168.3.1. Now what we are going to do, we will configure our ISP here. After that, I will explain you some things. Okay, tell me, Kaushal, will R5 ping R2 right now? R5 can R5 communicate with R2? Will it ping R2? R5. What was the IP of this R2's interface? 101 dot. It's not pinging. Why? Can you tell me? Okay. 192.168.1.2. 3.2 now. Okay, now what we will do, Kaushal, here. Okay, let's do create one loopback also. Now tell me what we will do here. Array. Now, Kaushal, tell me what is one thing that is missing on R1. Hello, Kaushal. What is the one thing that we haven't configured on R1? Were you disconnected? Where? In R1, do we configure HSRP? Huh?
In R1 we configure HSRP. अरे यार. Should I explain HSRP once again? Okay. Here we will perform routing. Do I need to explain HSRP again, or you just met with an misunderstanding or little bit confusion? That's why you said. You have a clear concept now of HSRP where we enable. Okay. So what was the command? थोड़ा तो करा होगा ये HRP. No auto summary. Okay. Will we write the command passive interface here? Why? Yes, we want to send the hello and update messages so that it can make the neighborship with other routers. Okay, that's why. Say hello message or update message and talk about that neighborship process. Okay, now will our R5 will ping? Let us see. Is it pinging 1.1? There is some IP mistake. Let's open R2. Int E0/0. Okay, we haven't configured IP on E0/1 interface. IP address 192.168.101.1. No shit. Okay. Okay, is it pinging? So Kaushal, can you tell me? Okay, it's a very basic question. Okay. Hello. तुम डिस्कनेक्ट करो क्या बार बार? अरे वो आवाज. तो मेरे को ये बताओ, ये हमने इसमें डिफॉल्ट गेटवे 100 दे रखा है, ठीक है, तब भी ये R2 को कैसे पिंग कर रहा है? R5 में डिफॉल्ट गेटवे 100 दे रखा है ना, तो ये R1 को R2 को पिंग कैसे कर रहा है? R1 कहां से आ गया? अरे R5 R2 को पिंग कैसे कर पा रहा है? हमने डिफॉल्ट गेटवे तो 100 दे रखा है ना, ये पूछ रहा हूँ. हाँ तो ये बोलो. ये वो. हाँ, यही तो आंसर है. तो उसमें R1 कहां से आ गया आपका? ठीक है, चलो. तो अभी हमारा ये जो राउट है, ओके, ये कहां से जा रहा होगा? अरे 1.1.1 ऊपर आईएसपी को पिंग कर रहे हैं. Do trace route 1.1.1. Let us see from which router it is going. Okay, it will go from the active router. Okay, I think I haven't configured send that HSRP on R3 and R4. R2 में करिए, R3 और R4 में नहीं करिए. ठीक है. So let's do HSRP configuration on R3 and R4. So Kaushal, tell me the proper command of HSRP. Okay, on which interface we will enable HSRP? Why on E0/1 we will enable HSRP? Okay, so what was the command? Standby, group name, any?
अरे सेम सेम ग्रुप नंबर में रहेंगे अगर सेम उनको वर्चुअल आईपी देनी है, ठीक है। स्टैंड बाय वन आईपी, व्हाट वाज द वर्चुअल आईपी, ठीक है। सो एनीथिंग डू वी हैव टू कॉन्फ़िगर हियर। Okay, so what was the command to check? Okay, it's showing in this peak. It will come either into the listen or standby. Let's go to the R4 now. Okay, Kaushal, there was one more rule that you haven't talked about. What was about the 10-second rule? There was one more rule, na? About 10-second rule in HSRP. What was that? Standby one. Okay. अरे 10 सेकंड का रूल था ना, क्या था वो? स्टैंड बाय में रहेगा नहीं, स्टैंड बाय तो एक ही बनेगा। अरे वो अगर 10 सेकंड्स के अंदर हमने कर लिया तो फिर इलेक्शन प्रोसेस चालू होगा, नहीं तो फिर वो अपना एक्टिव में रहेगा जो राउटर होगा ना जिसमें एचएसआरपी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो बाकी सारे अगर उनकी क्या थे स्टैंड बाय या लिसन में रहेगा। अरे एक ही राउटर छोड़ना होगा, ठीक है। स्टैंड बाय या लिसन में रहेगा। नाउ टेल मी कौशल, इफ आई वांट टू लुक हियर वी कैन सी आवर R2। So tell me here, right now our traffic is going from which router? Huh? R4. R4 to standby. R4 is our in the standby mode. Okay. अरे यार देखो अभी क्या चल रहा है। अभी हमारा जो R2 है ये हमारा एक्टिव है। Our R2 is active, our R3 is in the listen, and our R4 is in the standby. Now tell me from which, okay, now tell me from which interface or which router our traffic will flow. From R2. If I want my traffic to flow from R4, what we can do? Okay. If I will increase its priority, suppose by default every router's priority is 100 na. Here we can see 100 is the 100 is the by default. 100 is the by default priority. Okay. So 100 will be there on all the routers. Okay. So suppose I have changed the priority of R4 to 120. Okay. Now will our data will flow from here? Think once again. You are missing one thing. You are missing one thing. We have talked about one thing, no? That preemption. By default, preemption is disabled on active router. If any router which has a higher priority comes into the topology, then also it will remain the active. Okay. So we have to enable preemption on active router. Okay. Then only it can become the what? Active. Okay.
इलेक्शन प्रोसेस ही करनी होगा ना अगर प्रीएम्पशन एनेबल नहीं होगी तो. एंड देयर वाज वन कंडीशन टू एनेबल द प्रीएम्पशन. व्हाट वाज दैट? रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? अच्छा. Condition was that it should not remain on the default priority. Okay, we have to change the priority. Either we can do 110, 90, anything, but it should not be on the default priority. We have to change it manually. Okay, so that was our condition. Okay, so let us see how R4 now. Let's make R4 as. So Kaushal, tell me what was the command? How can I make this R4? Look, wait. First, we have to enable preemption on R2. What we can do, Kaushal, tell me. अरे थोड़ा कुछ तो बताओ, हिंट तो दो. इजी लैन इंटरफेस पे जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट वी विल गो इनटू द लैन इंटरफेस. ओके. Then we will write standby. Okay. Look, everything will start from standby in HSRP. Okay. Then we will write the group number. For which group number we are changing the priority. Okay. After that, we will see priority. Yes, priority. Okay. Here we will change the priority number to suppose it's R2 now. Suppose we will give here 90. Okay. Now we will enable preemption here. Okay. Standby 1 preemption. Okay. Preemption is enabled right now. So how we can see do show standby. Okay. Here we can see preemption is enabled. Okay. And we have changed the priority to 90. Right. Look, here it also talking, here it is also talking about the standby router, which is 101.3, which is our which router? R4. Okay. इसी की है ना यार IP R4 की. 101.3 इसी को दे रखी है ना. तो R4 का जो by default priority वो कितना है? 100 है. Here you can see right now that by default priority is 90 and by default its priority is 100. Its priority is higher, but still R4 is not making itself as what? Okay, its preemption is disabled. That's why it's not making itself as a. It's not making itself as a which router? अरे यार स्टैंड बाय तो पहले से ही है. अभी प्रीएम्पशन डिसेबल है तो ये क्या अपने आप को नहीं बना रहा. हाँ, अपने आप को एक्टिव राउटर नहीं बना रहा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी चेंज करेंगे. प्रायोरिटी चेंज करने की अब कमांड क्या थी? अब तो याद हो गई होगी. बताओ. प्रायोरिटी हम इसकी दे देते 120. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन राइट नाउ? Will anything happen if I have changed the priority? Tell me. Nothing happened, na? It's still in the standby mode and its priority is 120, but active router's priority is 90. We can see. But what was the reason that it was not making itself as active router? Preemption is disabled. So how we can enable preemption? We will go into the LAN interface and we will enable preemption. Standby. For which group number we have to enable preemption? For this. Okay. Okay. Now we can see that it has immediate. Yes. It depends on the images also. Okay. By default, preemption is enabled on our which router? Standby and listen router. Okay. Active router we have to enable it, but here, and this is a virtual image now, so here we have to enable it. So we can see on. Yes, here it is disabled. That's why I'm saying that it's a virtual image. Maybe that was the problem. Okay. So here we can see that it has changed its mode. We got the message now.
Now can you tell me from where our data will flow? अरे from which router our data will go flow? आपको पता है, आपके सामने हुआ है जो हुआ है, आप बताओ पक्का. Let's do a trace route. Do trace. ओके कौशल, अगर मेरे को ट्रेस राउट पीसी से करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? ट्रेस राउट अगर मेरे को पीसी से करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूंगा, क्या कमांड? ये पीसी नहीं है, R5 अभी पीसी नहीं है, पता है ना, ये राउटर ही है, वो हमने नो आईपी राउटिंग करके. हाँ, तो अगर मेरे को पीसी से चेक करना है तो मैं क्या करते, क्या कमांड होती है? So here we can see that. Hey, wait. So here we can see our data is flowing from 101.3. It's from R4. Now let me show you one more thing, that if we have to create like multiple groups, for that we have to do nothing. Or like we have to create, like I have created a new group. Okay, standby 2. Okay, here we will write IP. We will assign one new virtual IP 192.168.101. Suppose 200. Okay, so new group has been created. Okay, suppose I want for group 2 my data should go from R2. Okay, what I will do, I will lower the priority of standby 2 of group 2. Priority should be less, like 80. Okay, so from this we can change multiple groups priority and all. And question, there was one more thing, your track now. Let me show you. Okay, let's do one thing. Let's make a priority, change the priority of this R2 in T0/1 standby 1 priority. Let's make it 120. Okay, so by default, let us see. Let's speak straight. हमारा अभी स्टैंड बाय कौन सा है? R3 का है. अरे स्टैंड बाय बोल रहा है, R4 तो एक्टिव है ना. ओके, ये लिसन में R2 R2 ही होगा, R2 show stand by. Okay, so now what we will do, okay, here we will make use the track command. Okay, ये track command लिख लेना कौशल, जो कुछ होते हैं. We will create one track. Okay, after that we will create one object, we will write it name. Okay, after that what we have to do for the interface, which interface we will track, E0/0 interface. Okay, and we will search for the line protocol. Okay, now what we will do, we will go into the E0/1 interface. Okay, after that I think standby for group 1. अरे मैं अभी डू शो करके दिखा दूंगा, डू शो ट्रैक, ट्रैक, उसके बाद ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर जो भी हमारा था. ठीक है, उसके बाद डिक्रीमेंट कर देते हैं हम 50 से. ये डिक्रीमेंट 50 क्या है? प्रायोरिटी है. ठीक है, 50 प्रायोरिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिसेबल आवर एंड E0/0 इंटरफेस. ओके, ऊपर वाला इंटरफेस डिसेबल कर रहे हैं ताकि यहां से राउट्स आने बंद हो जाए. ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्या ये अपडेट करेगा? ओके रुको, पहले एक चीज दिखा दो, डू शो स्टैंड बाय. ठीक है, ओके ओके, तो देखो, वन ट्रैक ऑब्जेक्ट 1 स्टेट अप. ठीक है, स्टेट अप दिखा रहा है ना. अरे अभी E0/0 अप है ना, तो डिक्रीमेंट क्या है? 50. प्रायोरिटी कितनी है? 50 से डिक्रीमेंट होगी. ये इसको छोड़ दो. ठीक है, ये हमने जो नया ग्रुप बनाया था ना वो है. अरे अभी ग्रुप 2 बनाया था ना स्टैंड बाय 2 करके, न्यू वर्चुअल आईपी दे दी. देखो दिखाएगा इसमें, वर्चुअल आईपी नहीं दिखा रहा. ये देखो, ये 200 जो है ये वर्चुअल आईपी दी थी. इसको छोड़ो अभी. ठीक है, अभी ट्रैक पे फोकस करते हैं. तो वर्चुअल आईपी है, अभी स्टेट एक्टिव है. ठीक है,
और क्या था हमारा, प्रीएम्पशन अनेबल है, एक्टिव राउटर लोकल, स्टैंड बाय राउटर देखो 120 प्रायोरिटी है, ठीक है। हमारा मेन ये है, अभी ट्रैक ऑब्जेक्ट है 1, स्टेट क्या है अब दिखा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, E0/0 इंटरफेस पे इसको शट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या क्या चेंज आया है, देखो ट्रैक ने सीधा मिली सेकेंड में बता देता है ये, सॉरी, ट्रैक विल टेल इन ट्रैक will tell about that its line protocol is down in a milliseconds. Okay, you can see here message that track interface E0/0 line protocol was up, now it's down. Okay, and it will break the neighborship. I think yes, it will break the neighborship 3.2. Okay, interface is down because of that, and here we can see that its HSRP state has been changed from active, it become speak. Okay, after that it will go either into the standby or listen. Okay, election में लकर, now we will see that on which interface, here R2 will become the standby, I think. Okay, R2 हमारा क्या हो गया, अब एक्टिव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, R5 से अगर हम पिंग करें, अच्छा रुको, कौन से पे करा था, अरे रुको मैं अभी कुछ बता रहा था तुम्हें। अब हमारा जो R5 का डेटा होगा वो कौन से राउटर से जाएगा, अरे हमने नहीं बनाया वो, अपने आप बना, ठीक है। R3 क्यों होगा, R3 लिसन में है ना, R3 लिसन में किसकी, अरे R3 की तो 100 ही हमने तो चेंज ही करी है, R2 की देखो 120 कर दी थी ना, अरे उसके बाद मैंने प्रायोरिटी चेंज करी थी ना, बार बार मल्टीपल खोलने पड़ते। तो R4 अब ये देखते हैं कमांड, तीन ही दिखा रहे, रुको रुको मैं देखता हूँ। तो गाइस टुडेज योर होमवर्क इज टू यूज द ट्रैक कमांड। सुनो, इस वाले को मत डाउन करना, ठीक है, इवन जी में इस वाले इंटरफेस को डाउन करोगे तो वो लाइन प्रोटोकॉल ना अप ही दिखाएगा, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक और चीज कर सकते हो, ओके, वन इज फ्रॉम यू कैन यूज द ट्रैक कमांड फ्रॉम this line protocol na, and one you can do from the this routes, like from 1.1.1. If 1.1.1 routes is not receiving on this R4 na, then also it's your homework. Okay, this one is your homework. If 1.1. line protocol अब दिखाता है, ठीक है, इमेज का इशू हो सकता है क्या पता, पर रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उतना आइडिया होगा तुम्हें, ठीक है। अब सुनो होमवर्क जो तुम्हारा है, इसमें ट्रैक कमांड में आप क्या करोगे, मैं कमांड लिख दूंगा यार, थोड़ा ढूंढोगे फिर बाद में बाकी। अरे अभी मैं क्या बता रहा था, अच्छा कमांड्स लिख रहा था ना, किस की कमांड्स, अरे स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में डाल देना। क्या था, अरे किसकी कमांड चाहिए थी वो बताओ ना, प्रायोरिटी चेंज की, देखो पहले प्रायोरिटी चेंज, अरे रुको, हाँ सारा बताना पड़ेगा ना यार, देखो दिस इज द LAN इंटरफेस, ओके, फर्स्ट वी विल चेंज द प्रायोरिटी, माइक म्यूट कर लो, स्टैंड बाय, वी विल राइट द ग्रुप नंबर, वी विल राइट द प्रायोरिटी हियर, ओके, and we will change the priority, suppose 120, 110, okay, you can write anything, okay. After the priority change we can enable the preemption feature on HSRP of active router, okay, standby 1, for which group we are activating this preemption, okay, we have to write down that, okay, we have write down, and after that we will use the track command, okay. अभी इंटरफेस में नहीं जाना, ठीक है, ट्रैक में, ठीक है, फर्स्ट वी विल क्रिएट वन ट्रैक, ओके, वी विल नेम इट 1, ओके,
उसके बाद क्या था, चेक करता, ट्रैक, अरे वहां पे लिखना पड़ेगा ट्रैक 1, ओके। हाँ, इंटरफेस, उसके बाद E0/1 जो भी है, ठीक है, लाइन प्रोटोकॉल। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, ट्रैक 1 इंटरफेस E0/0, ये कौन सा इंटरफेस होगा, वेरी गुड, जो हमारा आईएसपी के एंड से जा रहा है, ठीक है, ये भी लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, लाइन प्रोटोकॉल, ओके। After that what we will do, we will call this group, or we can say call this object, ओके। इसका नेम होता है ट्रैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या नेम होता है इसका, अरे क्या नेम होता है इसका, ट्रैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप बताओ ना, याद नहीं रहेगा फिर आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार और टेलीग्राम में डाल देना, उसके बाद आगे लिखते, अरे आप लोग, अरे यार फोन से फोटो ले लो, मेरे फोन पास में नहीं रखते हो क्या। तो देखो, we have created object group here, okay। Now your track object now your tracking is not enabled right now, okay। We have to call this group where, अरे बताओ, आपके सामने करा था, we will call that group on the LAN interface, okay। How we will call on the LAN interface, with the help of standby, okay। We will write group number here, we will write track, and we will write track number here, okay। यार यहाँ पे अगर कुछ होगा मेरे को याद नहीं है, अगर होगा तो देख लेना, शायद नहीं होता, ठीक है प्लीज, हाँ चेक कर, अभी मत करो, देख लेना बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका जो भी लैन इंटरफेस होगा उसे डाउन करोगे, ठीक है। अब जो आपका ये देखो, ये this practical you guys have to do, okay। But there is one more practical that you guys have to do, okay। For that practical I am writing the command, okay। Like for with the help of this command you can check the roots of 1.1, if your this like this is your ISP, okay, this is your ISP, here we have 1.1.1, okay। If this 1.1.1 roots is not coming on this router then also we can change its priority, or we can disable this router, okay। How we are going to do that, okay, for that we will have a command, okay। I think yes, track, I think object name, okay, here you will write IP route, okay, whatever the IP you can give, either 1.1.1 or maybe 1.8.8.8, and here you will give the subnet mask, okay। And after that you will write reachability, okay, reachability होगा, ठीक है। After that you will write reachability, okay। Now what you guys will do that okay, हाँ सुनो, प्लीज वो बंद रखना है आपके पैसिव इंटरफेस, ठीक है, ठीक है कौशल, ये पैसिव इंटरफेस रखना, वरना ये ट्रैक कमांड वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसको यहाँ से रूट्स मिल जाएंगे। हेलो, ठीक है, यहाँ से रूट्स मिल जाएंगे, पैसिव इंटरफेस ये रखे रखना, ठीक है।
ये प्रैक्टिकल करना। और इसका भी ले लो, एक बार वो ले लो, फोटो ले लो, छोटा सा ही है।